least 25 children aged between 5 months and 8 years in Madhya Pradesh and Rajasthan are dead because their parents gave them something that millions of parents do every single day across the world: give their children cough syrup. Now, I want you to look at their faces and listen to their names, because what I'm about to show you takes the cough syrup death story to a terrifying new level. Adnan Khan, 5 years old. Anas, 6 years old. Bhanu, 17 months old. Chanchalesh Yaduvanshi, 7 years old. Nityansh, 5 years old. Rishika Pipre, 5 years old. Samrat, 2 years old. Shivam Rathore, 4 years old. Tirath Raj, 2 years old. Usaid Khan, 4 years old. Vidhi Deharia, 3 years old. Vikas Yaduvanshi, 3 years old. Yojita Thakre, 2 years old. Dhani, 1.5 years old. And Sehrish, just 7 months old. There are many more whose pictures we have, but not their names. And there are many more whose names we have, but not their pictures. But there are at least 25 children who have died. Each of these is a child who will never grow up, a life cut short by something as ordinary, mundane, and trusted as cough syrup. Now, this tragedy began with a story, like I said, that NDTV first noticed and headlined last week. It has now become India's biggest health story. It's on the front pages of every newspaper in every part of the country. This NDTV campaign, Cough of Death, will not rest, and this is my personal guarantee, until there is justice, until heads roll, be it at the highest level, and until every parent can trust that what they give their child to cure a cough will not steal their life. I want to start by telling you about what this crisis is really all about and how it actually started and how NDTV ended up breaking what has become the biggest story of the year. A string of unexplained children's deaths were reported in Chhindwara district of Madhya Pradesh, India's largest state. Children with a cold were prescribed something called the ColdRif, a very common cough syrup in that particular area. These children, every single one of them, developed dark urine and chronic acute kidney issues. The deaths of those children, which took place very rapidly, have been linked to contaminated cough syrup, in this case ColdRif, but there are other brands as well. The children died within days of taking ColdRif, every one of them. At last count, 20 children are dead so far in Madhya Pradesh and 4 at last count in Rajasthan, and there are said to be an unspecified number of more children in both these states who have also had fatal consequences after being administered this cough syrup. Dangerously high diethylene glycol, or DEG, in the syrup is said to be the death. It's a controlled substance. It's not banned, but it's a controlled substance. DEG is a toxic industrial solvent. What was it doing in such high levels inside a children's cough syrup? ColdRif, for instance, which was responsible for most of these deaths, was found to contain 48% DEG, an industrial solvent, way, way, way above what is considered the safe limit. Now, the two states where these deaths have taken place, one is Madhya Pradesh, where the ColdRif cough syrup is currently banned. Then there's Nextro DS cough syrup, which is also banned. Like I said, ColdRif is the first one, Nextro DS is the second. Then in Punjab, ColdRif cough syrup is banned. In Jharkhand, ColdRif cough syrup has also been banned. And RespiFresh cough syrup has also been banned in Jharkhand. Relief cough syrup has also been banned. So 3 cough syrup have been banned in the state of Jharkhand. Coming down south to Karnataka, bans prescribing cough syrups for kids under 2 years old. No cough syrups are to be administered for children under 2, only prescription drugs for older children. Coming to Kerala, ColdRif sales have been suspended right now. No ban yet. No drugs for kids under 12 without a doctor's written prescription. In Telangana, Relief cough syrup has been banned. Relief is spelled RELIFE, and RespiFresh TR cough syrup has also been banned. Now let's name
the 4 drug makers, the pharmaceutical companies making these products that are facing this scrutiny and are perhaps responsible for these deaths. Sresan Pharmaceuticals is based in Tamil Nadu, and NDTV has visited every single one of them. They are the makers of ColdRif cough syrup. Then there is Rednex Pharmaceuticals, which is based in Gujarat. It has been told to stop producing cough syrups for the moment. There's a company called Shape Pharma, also based in Gujarat, has been ordered to stop producing cough syrups at the moment. And then finally, there is Kasan Pharma, based in Jaipur in Rajasthan, where some of those deaths have taken place, where the products have completely been pulled from the market. Now, I'm going to be speaking to experts tonight on NDTV's campaign Cough of Death. But I want to start by reminding you once again that at least 25 children are dead, viewer. 25 children whose names and faces I have just shown you and told you, because very soon we may all just forget them. Remember, they are children of parents. There can be no greater, no more devastating loss than the loss of a child, and all due to something as ordinary as cough syrup. And that's the reason why on tonight's show I'd like to start not with the experts, but a parent, a father. Syed Sawab Ali is the father of Sehrish Fatima. She was just 7 months old, baby Sehrish, and I'll show you pictures of her. Beautiful, adorable child. She is no more because she was administered this killer cough syrup. And he joins me tonight from Chindwara. Syed ji, आपका स्वागत है. मैं आपका दर्द बिल्कुल समझ नहीं सकता हूँ सैयद जी, क्योंकि जो हुआ है हम उसके लिए हमारे पास बिल्कुल शब्द ही नहीं है. कुछ दिन हो गए हैं सैयद जी सहरिश को खोए हुए. क्या आप ठीक हैं? मेरा पहला सवाल, आप कैसे हैं सैयद जी? जी सर, अभी ठीक हूँ मैं. ठीक हूँ अभी सर. सैयद भाई बताइए, उस दिन क्या हुआ था? सहरिश 7 महीने की थी. ये कॉफ सिरप जो था, क्या हुआ था उस दिन? सर, सहरिश को करीबन 23 तारीख की नाइट की बात है. उसको अचानक उल्टी हुई. खेल रही थी मेरे साथ मेरी बच्ची. उल्टी हुई तो मैं उसको डॉक्टर साहब के पास लेके गया. डॉक्टर पवन नंदू करके यहाँ पर भर्ती किए उसको 1 बजे करीब समथिंग. सुबह 12 बजे तक उसको पॉटले वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगे. तब तक लड़की बेहतर थी. उसके बाद अचानक डॉक्टर साहब थे नहीं, उनके स्टाफ वहाँ पर उसको केयर कर रहे थे. जब स्टाफ केयर कर रहे थे तो उसको बताया गया कि उसको सर्दी हो गई है, कफ वगैरह जम गया है, सांस वगैरह लेने में तकलीफ हो रही. तो उन्होंने वहाँ पर मैं मुझको बुलवाया. बोले कि भाई, बोले इसको सिरप वगैरह देना पड़ेगा लिखने के लिए. तो मेरे को सिरप लिख के दिए उन्होंने. उन्हीं के अस्पताल से मैंने सिरप लिया. सिरप ले आने के बाद दिया तो नर्स ने कुछ सिरप पिलाई बच्ची को. बच्ची को सिरप पिलाने के बाद अचानक उल्टी हुई बच्ची को, और उल्टी होने के बाद उसकी ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और धड़कनें बढ़ने लगी उसकी. अच्छा, उसके बाद 2 से 2:30 बजे के समथिंग डॉक्टर साहब आए. उन्होंने देखे बच्ची को. बच्ची को देखने के बाद बोलते हैं कि इसको तुरंत नागपुर रिफेयर करना पड़ेगा. तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया गया. एम्बुलेंस बुला के हम तुरंत नागपुर गए. नागपुर में सोएटेक अस्पताल में एडमिट करे. वहाँ के डॉक्टरों ने पहले ही बहुत बता दिए थे कि बच्चे की हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है. हम लोग कोशिश कर सकते हैं. 24 घंटे का टाइम दिए थे उन्होंने. मगर उसके बाद जब आईसीयू रूम में ले गए, आईसीयू रूम में ले जाने के 15 से 20 मिनट के अंदर बच्ची की मौत हो गई. सैयद भाई, इसके पहले सहरिश को कभी आप या अपनी पत्नी ने ये खांसी की दवाई दी थी इसके पहले? हाँ सर, इसके पहले भी एडमिट हुई थी बच्ची. सर्दी खांसी वगैरह की दवाइयाँ वहाँ से चली हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से, मगर मुझे इस चीज़ का याद नहीं है कि कौन सी दवाई दी है. जब आप डॉक्टर के पास गए थे सैयद भाई, वो इस दवाई का नाम लेके प्रिस्क्राइब किया था या ऐसे ही बोला था कि ये खांसी की दवाई दिया जाए? नहीं सर, ऐसा तो थे नहीं. वो जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे कागज में छोटे स्लिप में लिख के दिए थे. उन्हीं के मेडिकल से लाया मैंने, और उसी सिस्टर ने दवाई को पिलाई थी. इसके बाद क्या हुआ? कुछ कार्रवाई हुई?
आपसे कुछ पूछताछ हुआ, डॉक्टर से कुछ पूछताछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ सैयद भाई? देखिए सर, डॉक्टर साहब से तो कोई मेरी पूछताछ नहीं हो पाई, क्योंकि कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे भी चक्कर वगैरह आ रहे थे, और मेरी मिसेज की भी हालात बहुत खराब हो चुके थे कि हम लोग को अफरा तफरी का माहौल था। मेरे दोस्त भाई थे, उन्होंने बड़ी हेल्प करे मुझे, और उनके सहारे मैं नागपुर भी पहुंचा, और नागपुर में भी उन लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल करे, वो लोगों ने। और ये कॉफ सिरप खांसी की दवाई सैयद भाई खराब है, ये किसने आपको बताया? सर ये तो अभी छिंदवाड़ा के जिले के अंदर बहुत माहौल चल रहा है इस चीज को लेके। छिंदवाड़े में काफी बच्चों का इस सिरप पीने से इंतकाल हो चुका है। और छिंदवाड़ा में जहां पे आप हैं आज सैयद भाई, कई और बच्चे वो भी नहीं नहीं रहे अब इसी के कारण। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए सर, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी, जो होना था वो तो हो गया। बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल को कि जो डॉक्टर साहब हैं, भाई जैसे मेरी बच्ची वहाँ रात के 1 बजे एडमिट हुई, उनकी जिम्मेदारी थी, जो मेन सर्जन होते हैं उनका काम था कि सुबह आके मेरी बच्ची को वो देखें। वो आए नहीं इस वक्त पे। उनके जो हाथ के नीचे के सर्जन लोग थे, उन्होंने मेरी बच्ची का केयर करे। जब मेरी बच्ची बहुत ज्यादा सीरियस हो गई तो 2 से 2:30 बजे जो सर्जन है, मेन डॉक्टर, वो आए और आते से देखे उन्होंने, और देखने के बाद बताया कि बच्ची बहुत सीरियस हो गई है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अपने टाइम का ख्याल रखें, आगे दूसरे बच्चों को तकलीफ ना हो इस सब चीजों को लेके। अगर आप जो आप डॉक्टर मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर। मोहन यादव को कुछ बोल सकते हैं आज सैयद भाई, तो आप उनको क्या बोलेंगे? अभी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी ऑर्डर्स पास कर चुके हैं, सेंटर से, दिल्ली से, भोपाल से नोटिसेस आ चुके हैं, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। लेकिन अगर आप कुछ बोल सकते हैं मुख्यमंत्री से आज, तो आप क्या बोलेंगे सैयद भाई? देखिए सर, वो लोग तो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आप मीडिया वाले भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मोहन यादव जी के साथ अभी सुबह सांसद जी आए, बड़ी। सैयद भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत ही धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही मुश्किल समय है आपका, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और इसलिए मैं एक वादा करता हूं एनडीटीवी की तरफ से कि हम इस ये जो क्राइसिस है कॉफ सिरप को लेकर, हम कैंपेन करेंगे और हम जस्टिस लाएंगे सहरिश फातिमा को। धन्यवाद सैयद भाई फॉर जॉइनिंग अस। जी। I want you to remember that number once again, viewer. The man you just saw on your screen is just one parent. There are 25 couples who've lost their children, and nobody even knows their names or their faces. And that's the reason why I wanted to hear from someone who the media will never let you hear, because after all, they are from an obscure part of the country where death is normal, life is cheap. That's what we've been trained to believe. And yet, the idea of 25 children losing their lives because of cough syrup is just so terrifying. And I wanted to get wisdom to help us understand this truly upsetting, troubling, nightmarish story from one of the finest voices in India's healthcare environment. Dr. Naresh Trihan is Chairman and Managing Director of the Medanta Group of Hospitals. Dr. Madhavi Bharadwaj is a well-known pediatrician and an allergist and an influencer as well. Dr. Trihan, I would like to start off with you. At a time like this when emotions are running high, and it is difficult to quantify the loss of 25 children, sir. Everyone is looking for someone to blame. Is it the system? Is it just the companies? Is it the regulator? Is it the local government? What would you say to someone who's looking for an immediate answer as to how something like this could have happened, Dr. Trihan? So, Shiv, thank you for this opportunity to discuss this very grim matter, which is very upsetting, as you rightfully said, that children have lost their lives at an age where it's just devastating. There are three parts to this whole tragedy.
One is the person or the company that made the syrup. Made the syrup with diethylene glycol instead of glycerine, which is normally to be added to make the syrup a little viscous so that it can be given to children without them actually aspirating it, because if it's pure liquid or very liquidy, it can cause problems. So that is the substitution that this company or the number of companies that you have talked about apparently have used in very high dosage, and it's a very toxic material to the human body. And leave alone to the human body, to the children, it is lethally toxic. Yes.